This is Omair and I recently joined Wahdaan Academy. So आज इनका ओपन हाउस सेशन था तो उसमें हमने कुछ प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए. So let's begin to explain. So सबसे पहले जो हमने बनाया है वो बनाया फायर फाइटिंग सिस्टम. इसको पहले मैं चला के दिखा देता. तो जैसे ही इस पर आग लगेगी ये क्या करेगा, इसको डिटेक्ट करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, ये डिटेक्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि एक तो आग लगी, इसने डिटेक्ट कर. इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप देखें तो LCD पे कुछ वैल्यूज़ आ रहे हैं. ये वैल्यूज़ का आना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसका रीज़न ये है कि ये वैल्यूज़ आपको बताती है कि आपका रिस्पॉन्स किस टाइप का होना चाहिए. अगर इसमें वैल्यूज़ कब आ रही है, बीच में इसका एक छोटी मोटी आग लगी है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट. आप उसमें क्या करें कि आप जाके देख लें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्रैक हुआ होगा या किसी ने आग जलाई होगी. इसकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी सो यू विल कम टू नो कि व्हाट योर रिस्पॉन्स शुड बी. बड़ी लेवल की आग लगी तो इसका मतलब है कि अब आपने आग नहीं बुझानी है, आपने लोगों को बचाना है. तो ये लेवल्स की जो आग की जो वैल्यूज़ हैं ये आपको बताएंगे कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है. Our second project is related to the radar system. As you can see, the components that we use is the Arduino servo motor and sonar system. The main purpose of this is to detect any obstacle. If you find any obstacle, so as you can see that if I place my hand near to the sonar system, so you can see the red line. This red line shows that there's some obstacle. This is as similar as you watch in the Hollywood movies. There's no difference. The combinations, the coding, and everything are similar. The third project that we created is the RC card system that is controlled by our mobile. It is completely wireless. You can control it through your mobile. As you can see, multiple dimensions. Okay, our next project is related to the smart firefighting system, in which I use, it is completely, you don't need to use Arduino, it is completely direct, in which I use relay module that is basically that controls the voltage. It supplies the equal voltage to all the equipment, and also I use IR sensor and power supply, which is obvious. Okay, so as you can see that whenever I insert the fire near to it, so you can see there is a water. So it starts the water, which means whenever the system and anywhere you fight a fire, so you can insert into it, so it will start pouring the water automatically. So our next project is related to the smart security system, in which I lock the value which is 20 centimeter, which means if someone is inside the 20 centimeters, so it will start buzzing and open the lights so that all the people come to know that there's some obstacle inside or within the range. Apart from it, from this purpose, it even detects the distances. As you can see, if my finger is outside the range, which means more than 20 centimeters, so it even detects the value. You can see my finger. If I make my finger closer to it, यहाँ पे दिखाएगा इसमें. So eventually क्या कर रहा है, ये आपको वैल्यूज देगा, वहाँ पे दिखाती, वहाँ पे भी दिखाती. ये वैल्यूज ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी. मेरे फिंगर दूर जाएगी, ऑटोमेटिकली वैल्यूज दूर होती